take care of the last line, what it is there. Whenever you are writing any program, you have to write a label. Label means the address where you are writing the program. I will show you how you are writing the program. So here you have to write the starting address of your program. You have to write a mnemonics, then operator. Okay. In this way, you have to write your program. So 1, 2, 3. And comments you write or not. If you are writing a comments, it is a very good programmer. If you are not writing, then you are omitting something, or it is not. But to show your programming skill, if you are writing the comment, it is very good. Okay. So next we will go over the instruction. What the different type of instructions are available in 8085. First type of instruction is your data transfer, then arithmetic, logic operation, branch operation, then machine control operation like this, IO or stack. So please, data transfer. Data transfer matlab, the data can be transmitted from one place to the other. Either it is transfer between two registers or memory to register or register to memory. Only three conditions are there. Data किसके बीच में transfer होगा? Internally transfer होगा दो register के बीच में, या it will be transferred from memory to register or register to memory. That means write operation type of work. Another it will be communication between IO to microprocessor or IO to register to IO. These are the things are there. To do this transmission, transfer of data, these are the main instructions are used. Move, MVI, LDA, STA. If I am writing move, MVI, LDA, STA, these are comes under that 74 instructions. If I am writing move A, B or move B, A, that comes under that how that 270 is the total 74 is divided into 26. So one by one we will discuss. Now these are the data transfer instructions are there. So now I will explain you all things. Guys, it's so. आप मुझे बस ये लिख के रखिए, मुझे बोलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं आपको बताते जाऊंगा. फर्स्ट इट इज मूव A, B. Please take care. A, B means I have already explained you. First you have to write the destination, then you have to write the source. पहले destination लिखना जाएगा, फिर source लिखा जाएगा, then you have to transfer B to A. If you are executing this, then after executing this, the content of B will be copied in A. Clear? Then similarly you can write move C, B or C, A like this you can do. That means accumulator content will be copied to C. Clear? This is which type of transfer of data? Internal register. दोनों चीज internal है microprocessor का. You are doing this. So this type of transfer with quickly with a minimum time this type of transfer can be possible because दोनों चीज microprocessor के अंदर है. A भी अंदर है, B भी अंदर है. So it is require a very less time. So next we will go for next other type of instruction. मैंने आपको बोला एक दूसरा ट्रांसफर होता है मेमोरी से लेके क्या बोलते हैं इसको रजिस्टर के अंदर या रजिस्टर से लेके मेमोरी. तो सिंपली इफ यू आर ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफरिंग और सिग्नल मूव यू कैन राइट मेमोरी टू एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर से मेमोरी तक. मेरी बात समझ रहे हैं? इफ आई एम राइटिंग M, A, आप इस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किए होंगे प्रोग्राम में. प्लीज मूव M, A. उसका मतलब क्या है? व्हिच इज द सोर्स? सोर्स इज द एक्यूमुलेटर, डेस्टिनेशन इज द मेमोरी. ओके. इफ यू राइट only this expression, it will not execute because memory is not defined. आपके पास तो मेमोरी का so many locations are there. Into which location it will move? Getting my point? So for that you have to initialize to which memory location it will move. So one instruction you have to use LXIH 4500 H. उसका मतलब LXIH. So one instruction you have to use. I will explain you now what is LXIH. आप जब register pair पढ़ रहे थे एक HL pair था. What is the job of the HL pair? Please take care. What is the job of the HL pair? Memory pointer. It is a memory pointer. That means the content of HL pair is indicating to a memory location. Okay.
if I am writing LXIS, that means it will load HL pair with 4, 4, 5 and L is 0, 0. So HL pair, the content of HL pair is 4, 5, 0, 0. Get it? So if I am writing LXIS, that means it is load HL pair. X matlab always if there is an X in the instruction, it is indicating to extended or 16 bit. In your 8085, in any instruction you will find a one X is written, it is related to one 16 bit. So here LXIS means it is HL pair. So LXIS 4500, this instruction will load 4500 to HL pair. So in the microprocessor, if there is an HL pair, if it is generating 4500 HL pair inside the microprocessor, and you are writing this instruction, that means this data content of accumulator will move to a memory whose location is defined by HL. So when you execute this instruction, what will happen? In the memory location, there is an address is 4500. The content of accumulator, if it is 8, after execution, now the content will be here 0. It will be there. Every instruction here. Without m comma ma. So whenever you are writing move m comma a, you cannot write it alone. Before that, you must define that HL pair or memory location where you want to transfer the data or where you want to receive the data. Shall I move proceed? और कोई डाउट है? Could you explain that LXI part? Okay, LXI अभी मैं बता दूंगा LXI. Other than LXI clear? कुछ और एक बार बता देता हूँ. मान लीजिए you have to do an instruction move a comma m. इसका मतलब क्या हुआ? मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डाटा आएगा. So when you are coming from memory to accumulator, what it will happen? Which memory location से आपके पास जो मेमोरी है वो तो starting address from 000 से FFF. So many 64 locations are there, and each location containing 8 bit. Which location से data accumulator में आएगा? You have to define a particular location. So you have to do LXIH 5000X. That means the HL pair is loaded with 5000. So when HL pair is loaded with 5000, it is a memory pointer. It is indicating to a memory location of 5000. So when, after that, if you are writing move m comma a comma m, that means the m whose address is defined in HL pair. HL pair में कितना है? 5000. Now the content of 5000 will move to the account. Clear? Yes. So now we'll go for the next. Okay, next we'll go. So now move का काम खत्म हुआ. आपको HL pair की बात बोल रहे थे. Now please look at here HL pair. It is you have to write LXIH. If I can anything can possible. LXIH हो सकता है, LXIB, LXID कुछ भी हो सकता है. If it is LXIB, it is indicating to BC pair. So the instruction LXIB 4000 will place 16-bit number into the register pair B and C. This 16-bit number क्या है? 4000. So 00 will be put in C, 40 will be put in B. So this LXIB, if I am writing, so it will do the modify the BC content like this 4000. If I am writing LXI D 500, then in DE pair 500 will be stored. D में रहेगा 50, E में रहेगा 00. 5000. Agree? So this is your LXI operation. तो क्या है ना? Instruction place, if you are writing this 16-bit data directly put into that register pair. LXIH means HL pair. LXIB मतलब BC pair. LXID मतलब E pair. Okay. Okay. Now we'll go for next data. MVI. MVI मतलब it is you can directly put the data. I have already explained you what is MVI. So then you go LDA STA. First we'll go for LDA. Okay.
So please take care. LDA must be followed by a 16-bit address. LDA instruction is always followed by a 16-bit address. You cannot write LDA only. LDA must be followed by a 16-bit address. So what is the meaning of this LDA? That means load accumulator. Okay, load accumulator matlab when you execute this instruction, the content, if this is the memory location, the address is 4500, the content of this 4500 will come to the accumulator. तो यहाँ पे दो क्रॉस था. After execution of this, the content will move to the accumulator. Load accumulator from the with the content of this defined address. ये 4500 लोड नहीं हो जाएगा accumulator, वो तो जगह ही नहीं होगा क्योंकि 4500 is 16 bit, accumulator में रहेगा 8 bit. Clear? So in this case, content of 4500 will move to the accumulator. Clear? Yes, sir. Agree? Okay. So next we will go ये LDA हो गया, इसका जस्ट ऑपोजिट है STA. STA also followed by a 16-bit address. यहाँ पे क्या है ना, मेमोरी से जो डिफाइंड एड्रेस है 4500 से आ रहा था, मेमोरी से आ रहा था एक्यूमुलेटर में, बट इट इज लोड एक्यूमुलेटर, इट इज स्टोर एक्यूमुलेटर, STRE, स्टोर एक्यूमुलेटर. दैट मींस द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी स्टोर्ड इन द डिफाइंड मेमोरी लोकेशन. जस्ट ऑपोजिट. LDA मतलब तो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? LDA मतलब which operation it is? Please tell me. If you are doing an LDA operation, which operation you are doing? Read or write? So write operation. Read operation. Read operation. STA मतलब write operation. Operation. ठीक है. तो ये LDA STA के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था हम लोगों का? देखो तो. LHLD. LHLD. Okay. So now we'll go for again that. आपको कौन सा स्क्रीन विजिबल हो रहा है अभी? ये व्हाइट बोर्ड विजिबल हो रहा है ना? Yes, sir. Yes. Okay. So now we'll go for your LHLD and it must be defined followed by an address. Okay. So what is this? It is वहां पे LDA था, लोड एक्यूमुलेटर था. Getting my point? यहाँ पे क्या होगा? लोड HL पेयर, LOAD, लोड HL पेयर. मेरे बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये कैसे होगा? लोड HL पेयर किसके साथ लोड कर, वहां पे LDA में क्या हो रहा था? LDA फॉलोड बाय एन एड्रेस. द एड्रेस का जो कंटेंट था वो एक्यूमुलेटर पे आता था. ठीक है. जो मेमोरी लोकेशन है उसमें कंटेंट का साइज कितना है? व्हाट इज द कंटेंट साइज? हाउ मेनी बिट इज स्टोर इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन? 8 बिट. बट अब क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, जो मान लीजिए 2040 लोकेशन दिया है, द कंटेंट ऑफ दिस विल मूव टू L address and the next address 2401 content will move to H address. So this is because LH क्या है? 16 बिट है. ओके, तो 16 बिट डाटा को स्टोर करने के लिए तो हमको दो मेमोरी लोकेशन चाहिए. So the first memory location whose address is defined in the instruction, the content will move to L and the next memory location content will move to L. समझ रहे हैं? नहीं समझ पाए? ठीक है. So यहाँ what is the sort? It is, we are calling it is load HL pair. Okay. So similarly, the another it is there. SHLD, that is called your store HL pair and the address मान लीजिए 2550 है. So what will happen? Please tell me. The reverse process, उस पे read हो रहा था डाटा, यहाँ पे write होगा because HL pair का डाटा जाएगा बाहर.
स्टोर एचएल पेयर, वो लोड एचएल पेयर मतलब बाहर से लाके लोड कर रहे थे एचएल पेयर में, अभी एचएल पेयर में जो है उसको लेके मेमोरी में स्टोर करना है। तो क्या होगा, पहले किसका डाटा जाएगा, एल का डाटा जाएगा 2550 पे, देन एच का डाटा जाएगा 2551। ठीक है, ओके, Yes, sir. clear, okay. So next we will go for that. So LXI आपको बता दिया, अभी LDAX STAX। LDAX then STAX। अच्छा, सो एक चीज है यहाँ पे, इट इज ए वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें LDAX का LDA मतलब है X, here it is X, so that means it is indicating to a, अभी क्या बोला था, X मतलब क्या है, एक्सटेंडेड, X मतलब it is indicating to a register 16-bit pair, location. always X is indicating register pair, हाँ, so that means if you are writing STAXB, okay, we are writing STAXB, उसका मतलब क्या हुआ, the content of BC पेयर में कुछ डाटा है, it is a 16 bit, okay, it is indicating a memory location। यहाँ पे पर्टिकुलरली HL को छोड़ के इंडिकेट पॉइंट करता ही है, लेकिन if you are using this instruction, in that time content of BC is locating to an address whose address is content in BC register pair। If this is written is 4500, then this 4500 मेमोरी लोकेशन से जो है उस पे एक्यूमुलेटर का डाटा यहाँ आके स्टोर होता है। It is written STAXB। Getting my point? Yes or no? Yes or no? ये दोनों चीज जल्दी बताइए। यस तो सर ठीक एक है, बार नहीं तो फिर नो भी से जल्दी बता बताइए। दीजिए। ठीक है, एक बार वो दूसरा स्लाइड से आपको क्लियर बता देता हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये लो LDAX, either operand will be B or D, it may be B register or D register। So the content of the designated register pair point to a memory location। Designated register मतलब BC और DE, उसमें जो content है it is indicating to a memory location। If this is LDAX, then instruction copies the content of memory location to the accumulator, that is LDAX-B। If it is STAX, क्या होगा, the content of the accumulator is copied to the memory location specified by the content of the register pair। और उसमें उसमें तो प्लीज रिटर्न LDAXB, ओके, यही इंस्ट्रक्शन था हम लोगों का। तो LDAXB मतलब इट इज दिस B, द कंटेंट ऑफ द डिफाइंड रजिस्टर पेयर। B X के साथ B लिखा है मतलब इट इज BC पेयर। द कंटेंट ऑफ द BC मान लीजिए है 5054, कुछ भी, ठीक है। तो नाउ दिस इज इंडिकेटिंग टू ए मेमोरी व्हिच एड्रेस इज 5054। दिस लोकेशन, उसका एड्रेस इज डिफाइंड इन BC पेयर। लोड क्या होगा, द कंटेंट ऑफ दिस
द कंटेंट जो भी है इस मेमोरी का, इट विल बी लोड टू द एक्यूमुलेटर. सो इट इज ए रीड ऑपरेशन. पहले क्या होता था, एलडीए यू हैव टू डिफाइन द डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन, बट वहां पे अभी इफ आई एम राइटिंग LDAXB, मतलब जो एड्रेस था जिस जहां से आएगा, दिस एड्रेस इज लोड इन द BC, ऑलरेडी BC में है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ये सर नो, प्लीज बताइए, मैं आपको ये कंपेयर करके बता देता हूँ. ये बताइए LDA 4500 उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LDA 4500? इतना बताइए मुझे फर्स्ट. Load the data which Please is there tell. in the address to accumulator. That means the content of 4500 is loaded to the accumulator. Okay. So the same operation will be there LDAXB if and only if the BC is containing 4500. The same operation will be there if you are writing this and BC content is this. That means here क्या हो रहा है ना, जो 4500 है उसका डाटा एक्यूमुलेटर पे आ रहा है. यहाँ पे BC का कंटेंट, the content of BC is indicating to 4500 and it is loading the content to the. ठीक है. अच्छा, so now come for the just opposite of that, STA 2500. What is the meaning of STA 2500? The Store. content of accumulator will move to the 2500. Okay, but if I am writing STAXB, उसका मतलब क्या हुआ? If I want to the same operation, then DE register must be loaded with 2500. So the content of DE pair is indicating to a memory location to which you have to store the data of the accumulator. Okay. Right. So now, then next is your LHLD हो गया था, then SHLD आपको बता दिया था. ये बता दिया था ना आपको कि एड्रेस है, इसमें L विल जाएगा 2550 को, H जाएगा नेक्स्ट लोकेशन. तो नाउ एक्सचेंज HC the content of the register H are exchanged with the content of register HL pair will be content with the DE pair, and the exchange of HL with D. And उसका मतलब क्या, H का कंटेंट D के साथ एक्सचेंज होगा, E का कंटेंट L के साथ एक्सचेंज होगा. दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, EXHG. दैट मींस द कंटेंट ऑफ HL पेयर विल बी एक्सचेंज विद DE पेयर. ओके. सो नेक्स्ट इट इज योर SPHL. द कंटेंट ऑफ द HL पेयर विल एक्सचेंज विद स्टैक पॉइंटर. सो दिस इज SPHL. So please now go for that previous. So ये जो लिखा है इसमें से आपको कौन सा समझ में आया, कौन सा नहीं आया, मुझे थोड़ा बता दीजिए. प्लीज चेक ऑल दिस. ये कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्योंकि दीज आर द मोस्टली यूज इन योर प्रोग्राम. ठीक है. Yes, sir. आइडिया हो गया. ओके, देन विल गो फॉर नेक्स्ट डाटा ट्रांसफर. वो जो पहला वाला स्लाइड था उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया था, इट इज डाटा ट्रांसफर आइदर विद इन द मेमोरी, सॉरी विद इन द रजिस्टर पेयर और मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, बट देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन फॉर द IO. So please now we'll discuss the data transfer instruction for IO device to the memory and memory to the IO device. So अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे एक मेमोरी है, एक डाटा यहाँ पे है 4500 पे, मुझे उसको एक्यूमुलेटर में लेना है. व्हाट इंस्ट्रक्शन आई विल राइट? व्हाट इंस्ट्रक्शन आई विल राइट टू मूव द कंटेंट ऑफ दिस टू दिस एक्यूमुलेटर?
What We can instruction use I like? LDI. लोड कर सकते हैं. Not LDI, it is called LDA. IT LDA sorry. LDA. 4500. Okay. If we are writing LDA 4500, then content of this memory location will move to this. But my requirement is that now this is an IO device. The content of this IO device will move to accumulator. Okay. So what you have to define the same way, but यहाँ पे रहेगा in instruction. If you are using in, then data will transfer from IO device to the accumulator. But you have to यहाँ पे किसका एड्रेस दे रहे थे? मेमोरी का एड्रेस दे रहे थे. यहाँ पे आप IO का एड्रेस देंगे 00H. What is the difference between IO address and memory address? I will tell you. The memory address is of 16 bit, but the IO address is generally 8 bit. सिक्सटीन बिट भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो 8 बिट की ही बात करते हैं. 16 बिट जिस दिन बताऊंगा उस दिन 16 बिट. ठीक है. सो इफ यू आर यूजिंग an in instruction, that means it is an IO device operation. So what is the meaning of in? The content of an IO device whose address is 00H will move to the accumulator. ठीक है. So now so the LDA जो ऑपरेशन कर रहा है, सिमिलर ऑपरेशन इज डन बाय इन, बट दिस LDA ऑपरेशन इज फॉर मेमोरी, दिस इज फॉर IO डिवाइस. यहाँ पे LDA के साथ 16 बिट एड्रेस था, यहाँ पे 8 बिट एड्रेस जुड़ा. दैट मीन्स इन 80H. उसका मतलब क्या है? The content of an IO device whose address is 80, it will move to the accumulator. That means जो IO device है उसका एड्रेस है 80H. The content of this will move to the accumulator. Getting? So similarly, what is the STA? STA क्या करता था? What is STA is doing? Store. 4500. Put it in the accumulator. Store the content of accumulator is going to an address memory location whose address is 4500. यहाँ पे if it is in memory then it is fine. If it is IO device then the address will be of 8 bit FFH, and from moving from the content of accumulator to the IO device to FFH, the instruction will be out FFH. So STA and out are similar, but STA is applicable to a memory location, out is applicable to an IO device. That means in this case, out means the content of accumulator will move to the content of that IO device whose address is defined in this instruction. So look at here. From the input switch 00 represent port address of the input switch. Out 00 means write the data or display device where 00 represent the port address of the display. That means IO device ka address is defined here. Out means accumulator to that port. In means from that port to accumulator. Clear? ठीक है. So next you rejoin within 1 minute. It is less than 1 minute. Please rejoin, then we will start. Okay. रिजॉइन पे अटेंडेंस ले लेंगे, फिर आप स्टार्ट कर लीजिए.